Hello, good afternoon everyone. How's everyone doing? क्या हाल चाल सभी के, कैसे हैं आप सब? हाय 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 चांदनी. हाय अंकुश. हाय हेलो एवरीवन. हाय 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 हेलो हेलो हेलो. कैसा था कल का सेशन? मजा आया आप लोगों को ऑन रैप्सडी? डिड यू ऑल गेट द राइटफुल इंसाइट व्हिच वाज रिक्वायर्ड? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट टुडे? बेटा इंग्लिश लैंग्वेज कल से स्टार्ट हो जाएगा. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनसीन पैसेज फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय योर ग्रामर सीरीज. ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, डोंट वरी. बस बस 1 मिनट और रुकते हैं. जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए एंड देन लेट्स बिगिन टुडे. शुभारंभ करते हैं मैकबेथ के साथ. नाउ दिस लाइव इज गोइंग टू बी ऑन द MCQs टुडे. ठीक है, क्योंकि मैकबेथ हैज 6 3 9 प्लस 9 विच इज 18 सीन्स ऑल टुगेदर. तो उसमें गिव रीजंस और MCQ साथ में कराना पॉसिबल नहीं था, तो बोल के आज हम लोग सिर्फ MCQ के ऊपर फोकस करते हैं. जो गिव रीजन वाला पोर्शन है वो मैं आपको अपने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो में आके द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजंस फ्रॉम ईच एंड एवरी सीन आई टेक दैट अप. मैं उसको बना के पोस्ट कर दूंगा. ठीक है. प्लीज डोंट आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस डियर. प्रिज्म और एप्सिडी से खाली 5 स्टोरीज एंड 5 पोएम आ रहे हैं. ठीक है, 15-20 ये सब मत करिए. हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. Let's get started. So let's dig into today's life. Hi, hi, Manisha. Hi, hi, everyone. Hello. Hi, hello, everyone. Hello. चले स्टार्ट करें. सो लेट्स क्विकली डिग इनटू मैकबेथ टुडे. आ जाइए, तैयार हो जाइए. स्टार्टिंग विथ एक्ट 3 सीन 1 ऑफ मैकबेथ. ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा. ऑल द बेस्ट एंड कीप ट्रैकिंग कि आपके कितने राइट हुए. मैं आपको हर सीन के बाद पूछूंगा कि आपने कितना सही किया. ठीक है, तो चले स्टार्ट करें. फर्स्ट वन. In scene 1, in the opening soliloquy, what does Banquo acknowledge regarding the witch's prophecy? In Banquo's opening soliloquy, what does Banquo acknowledge regarding witch's prophecy? क्या फील करता है? He feels suspicious about Macbeth, that he has played us most foully for it, right? That Macbeth has played most foully for it. So it will be option A. He fears that Macbeth played most foully to achieve the title of the king. Very good, guys. Very good. Very good. Very good. Next one. What is the primary reason Macbeth expresses for his fears in Banquo during his soliloquy? वेरी गुड. क्या बात है, आप सभी बहुत जोश में हैं आज. नाइस, आई लाइक द स्पिरिट. मतलब 100 on 100 is on the way, हाँ. So what is the primary reason that Banquo gives, that Macbeth gives to fear Banquo? It is his royalty in his nature.
And at the same time, he has a wisdom that guides his valor. Valor means his courage. ठीक है? He is naturally royal. At the same time, he is courageous. He is daring. That guides his valor. That guides his wisdom. Option D. Lovely. Chaliye. Number 3. Upon my head, they placed a fruitless crown and put a barren sceptre in my grip. What does the use of words, adjectives like fruitless and barren, signify about Macbeth's state of mind? कैसा है उसका state of mind? Macbeth feels tormented and inwardly he feels cabined, confined, and cribbed, right? He dwells on a restless ecstasy. Very good, very good. He feels frustrated that he has no heir, no offspring, no children of his own to carry forward with the legacy. He is frustrated. Amazing, amazing. Fourth one. How does Macbeth persuade two murderers to kill Banquo? What is the instrument that he uses? He uses manipulation and at the same time he tries to instigate them. Instigate करने का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना, right? किसी को भड़काना. Very good, guys. So basically, he says that it was Banquo in the times past who had made your life wretched and dealt with you in hypocrisy. ठीक है? So he accuses Banquo of all the past misfortunes which were inflicted onto the murderers. Very good, guys. Very good. Very good. Very impressive. Chaliye, fifth one. In Act 3, Scene 1, which of the following details does Macbeth inquire about Banquo's afternoon plans? Be cautious. ध्यान से. ठीक है? ध्यान से पढ़िए इसको. क्या क्या वो पूछता है? Amazing, 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 amazing. Very good, Khushbu. Conical Gang, Shrishti Agarwal. Music with soul. Very good, very good, very impressive. Is Banquo riding far? Yes. That Macbeth does inquire. Is Fleance going with him? Yes. If Banquo will return time for the banquet? Yes. Be not late, bolta hai. If Banquo is meeting the England ambassadors, the aristocrats? No. ऐसा कुछ नहीं होता है. So that makes P, Q and R your most correct answer and plausible one. ठीक है? And please जब आप लोग CFQs भी solve करेंगे ना काउंसिल का, when you all will be solving competency focused question, please ध्यान रखिएगा उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत भी है. So be a little cautious. ठीक है? कुछ कुछ आंसर्स गलत है CFQ के. मैं आपको खुद आके CFQ कराऊंगा. So don't worry. I'll give you the right answer. चलिए. Macbeth compares the different ranks of men, the different category of men. Rank means category of men to the different breeds of dog. Breed का मतलब हो गया species. ठीक है? What is his purpose in using this analogy? What is the meaning of analogy? It means comparison. What is his purpose of using this analogy? Comparison with the murderers. Why does he do so? Very good. To instigate, to manipulate, to gaslight, to corrupt their mind, to file their mind. Amazing. In an attempt to challenge them to prove that they in the valued file of the men by taking action. Macbeth tries to question their
manhood, challenge their manhood in the valued file. Valued file का मतलब क्या हो गया? Valued file is nature. ठीक है? In the nature's list, if they do top the rank in the best manhood category, then they should carry out the plans which Macbeth has filled their bosom with. Why does Macbeth claim he cannot kill Banquo himself? वो खुद नहीं मार सकता है despite being the king. क्या रीजन देता है वो? Amazing, amazing, guys, amazing, lovely. What a preparation, really impress. पक्का लीनाथ लॉक कर दिया जाए एको. He must maintain the loyalty of mutual friends that they both share. I have some common friends whose love I cannot drop. ठीक है? And लीनाथ, here you get 100 on 100 in English. And उसके बाद पार्टी देना मेरे को. हाँ, once you get 100 on 100 आप मेरे को पार्टी देगा. चलो. Which one of the following from scene 1 best illustrates Macbeth's descent, drowning, going down into cold-blooded calculation? ठीक है? He's turned into a ruthless tyrant. How is it evident? Be cautious. सोच के आंसर दीजिए. Very good. It will be option A, P and R. I will put that business in your bosom, the enterprise that is of ambushing, killing Banquo and Fleance that wears our health sickly in his life. As long as Banquo lives, we feel sickened by his existence. And the moment murderers are resolved, they are determined कि हाँ Banquo को मारना है, तब Macbeth का last line captures that Banquo, if your soul is to depart for heaven, it should tonight itself. And that makes P and R the most appropriate reason. Descent into cold-blooded calculation. ठीक है? While जहां पे Q आपका paranoia बता रहा है, troubled state of mind के बारे में बता रहा है, and let every man be master of his time till 7 at night is irrelevant over here. ठीक है? Very good. चलिए, next one. What specific instruction does Macbeth give the murderers regarding Fleance? क्या बोलता है Fleance को लेके? Very good, very good, very good. Fleance, who Banquo always keeps a company with, is equally significant to me. His death is equally important to me, as important as is Banquo's. Why? Owing to the witch's prophecy about Banquo's lineage, that Banquo shall father royal offsprings. ठीक है? That Banquo's descendant will be the king of Scotland. Chaliye. He shall be root and father to many kings. Next one. What does Macbeth mean when he says he has filed his mind? He has filed means corrupted, racked, tortured. What does it imply? ठीक है? For the Banquo's issue. Very good. He has defiled or corrupted his soul only for the benefit of Banquo's descendants. ठीक है? For the issue of Banquo, for the offsprings of Banquo. Now let me tell you all that apart from these live sessions, अगर आपको
जेन्युइनली अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, इफ यू वांट अ रोबस्ट इनसाइट इनटू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम एंड आप अपना बोर्ड के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना चाहते हो, it's my request, I can assure you that it is the best investment which you are going to do in your life. Go and buy my sample papers. 7th February से मैं लाइव आ जाऊंगा एप्लीकेशन पे. 7th Feb ऑनवर्ड्स हम लोग पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. 7th Feb को 2 पेपर उठाया जाएगा, 8th को 2 उठाया जाएगा एंड 9th को 1 किया जाएगा. Don't look out for quantity, just go for quality. 5 papers are इतना मतलब ऐसे क्यूरेट किया गया है उसको कि जब मैंने अपने टीचर्स को भी यहाँ पे दिखाया, like who go for their evaluation, trust me, they were super impressed by the kind of questions. उसके बाद आपको और कोई चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. चलिए, कितना राइट हुआ आपका? हाउ मच डिड यू गेट आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 आपको कितना आया? लिखिए 3, 4, 6, 10. आई होप 10 on 10 आया हो. हाउ मच डिड यू ऑल स्कोर आउट ऑफ 10? अमेजिंग, अमेजिंग. अगर आपका 7, 8, 6 आ रहा है, इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर बिलो 7, दैट मीन्स थोड़ा सा रीडिंग करने का और जरूरत है. अभी भी टाइम है आपके हाथ में. 9-10 दिन बचे हैं. आज कितना? आज व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 2nd of February. नो, टुडे इज 3rd of February, आई प्रिज्यूम. तो यहां से 7 दिन, 8 दिन और बचे आपके पास. 8 से 9 दिन आप अच्छे से रीड कर लीजिए. ठीक है. रीडिंग करिए, पेशेंटली पढ़ाई कीजिए, अच्छा हो जाएगा. चलिए, मूविंग टू Scene 2 of Act 3. Start करें. What does Lady Macbeth mean when she says, "'Tis safer to be that which we destroy than by destruction dwell in doubtful joy. It would have been better if we ourselves would have been, we ourselves would have been killed rather than the person whom we sent to peace, to rest in peace. And in exchange of that, we traded our own peace of mind." ठीक है. तो what does she mean when she says that? Very good, very good, very good. She feels that after Duncan's murder, they have traded their peace and death, while Duncan, in his grave, he sleeps peacefully for eternity. ठीक है. While their mind is racked. Amazing, amazing, very good. चलिए, हाउ इज द रिलेशन बिटवीन मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ शिफ्टेड इन दिस सीन? क्या हिंट मिलता है हमें उनके रिलेशनशिप के बारे में? देयर रिलेशनशिप हैज स्टार्टेड टू गेट स्टेन्ड, राइट? देयर इज अ ग्रोइंग डिस्टेंस, और their marital relationship is drifting apart now slowly and steadily. So उसे क्या इंडिकेट? वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, amazing, guys. Macbeth is now acting independently. He has become more assertive and he wants to perform any enterprise without her consent. He deliberately wants to keep Lady Macbeth out from any further enterprising, ठीक है? From any further plan of actions. The primary reason is because he has become assertive and he wants to take control and charge. At the same time, since they share a very troubled conversation at the beginning of the scene, he understands and he acknowledges this fact that Lady Macbeth is inwardly troubled and he doesn't want to trouble her any further. That is why, ठीक है, he takes a control. चलिए, next one. In this scene, that is scene 2 of Act 3, Macbeth says his mind is full of scorpion. What does this metaphor reveal? ये क्या बताता है? Very good, guys. Very good. Very good. That he is constantly consumed by stinging. Stinging का मतलब क्या होता है? Which is painful. ठीक है? Stinging is something which is painful. Stinging thoughts of guilt and the threat about Banquo's offspring, Banquo's lineage.
ठीक है, lovely. What is the instruction? Yeah, what instructions does Macbeth give Lady Macbeth regarding Banquo for the upcoming banquet? What does Macbeth say? To grant Banquo with special honor, right? To pay some extra attention to Banquo, special honor, and flatter him with looks and words, because that is the through which they can only way through which they can avoid further suspicion. ठीक है, through which they can avoid further suspicion. चलिए नेक्स्ट वन, ध्यान से पढ़िएगा इसको. चलिए नंबर 5th वन ध्यान से पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ट्रैजिक आयरनी of Macbeth's situation in this particular scene 2 of Macbeth? Very good, guys. Very good. Very impressive. Amazing. Amazing. They do have the crown, they have been coronated, but they do not have the security of it. Why? Because their own allies are suspicious of Macbeth and Lady Macbeth having foully attained the position of king and queen. And at the same time, Macbeth envies Duncan. So Macbeth is the one who killed Duncan, but then he envies, he is jealous of Duncan's peaceful state as well. Okay, he feels jealous or envious because the dead king no longer faces life's fitful fever which Macbeth is facing. Is Lady Macbeth finally happy now? No. Banquo has already fled the country? No. So that makes P and Q your correct option. ठीक है? चलिए आगे बढ़े. Macbeth mentions that we have scotched the snake, not killed it. I think बहुत सारे लोग को confusion है इसको लेके. Scotch the snake is basically associated with Duncan's regicide. ठीक है, Duncan's regicide. So it is only one part of the witch's prophecy which has come true, that Macbeth shall indeed become the king of Scotland, which he has. But however, Banquo's offspring shall bear the royal lineage. It is yet to be fulfilled, and he is in constant fear and trouble of that. ठीक है? That is scotched the snake, not killed it. Who or what does the snake represent? नहीं बेटा, अभी तक फ्लियांस भागा कहां है? स्कॉच द स्नेक नॉट किल्ड इट कब होगा? when is it going to take place? नेक्स्ट सीन में ना, जो मर्डर सीन होगा. इट इज एक्ट 3 सीन 3. तो फ्लियांस अप टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम भागा नहीं है. So how is Scotch the Snake not killed it associated with Fleance? It is associated with Duncan's murder, Duncan's regicide, that half of the enterprise is done. And as long as Banquo and Fleance are alive, they stand as a defiance to Macbeth's security as a king. ठीक है, got the logic? क्या है? So it is referring to the external and internal threats, potential threats to his throne, that his position is in a insecure place. ठीक है, got the logic? C होगा. चलो next one. What does Macbeth's request to scarf up the tender eye of pitiful day signify about his character development?
थीम का अगर बात करें तो ये थीम अलाइन हो रहा है विथ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी या द थीम ऑफ डिसेप्शन। ये क्या बता रहा है उसके कैरेक्टर के बारे में? What does it highlight about his characteristic trait? That embracing darkness has become a moral necessity now, right? To maintain or sustain his position as a king. So he is embracing darkness and evil to hide his future deeds. ठीक है? Very good. चलिए आगे बढ़े. How does Lady Macbeth attempt to comfort her husband when she finds him alone and brooding? How does Lady Macbeth attempt मतलब हो गया she tries, कैसे वो कोशिश करती है कंफर्ट करने का अपने पति को इस सीन में, when she sees that Macbeth is keeping all aloof. Very good, very good, very good. By saying what's done is done and it cannot be undone, it cannot be revoked, and he should stop worrying and stop overthinking. And please remember that this itself is ironical because till the time Macbeth had not entered and she was all by herself, she herself was dwelling upon the insecurity which has followed post their coronation. ठीक है? So that is ironical. चलिए next one. Things bad begun make themselves strong by ill. What does this line reveal about Macbeth's logic? To him, what is the most logical thing to do? That once he has waded into blood, the ocean of blood, he has stooped down to criminality. It is through committing more and more crimes he can maintain his power and position, rather his illegitimate power. ठीक है? Amazing, amazing. He thinks the only way to secure his position gained by evil is through more evil. Very good. And next one, which of the following pair of quotes from Act 3 Scene 2 highlights the theme of appearance versus reality? Theme alignment. कौन सा दो कोटेशन जा रहा है? ध्यान से, डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ो. कौन सा दो लाइन अलाइन हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सुपर्ब यार, सुपर्ब, सुपर्ब, लवली. Make our faces wizard. Wizard means a mask to our hearts. Disguising. Disguising is hiding what they are. And at the same time, Lady Macbeth's words, sleek over your rugged looks, be bright and jovial among your guests tonight. They both are aligning with appearance versus reality. So that makes your option C correct option. ठीक है? P and R. लवली. चलो बजाओ ताली, हो गया सीन 2 ओवर. एंड मार्क्स बताइए आपके कितने आए आउट ऑफ 10? कितना आया? 10 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, कितना आया आउट ऑफ 10? हाउ मच डिड यू गेट? लवली, वेरी गुड अब्दुर. प्रिया, लीनाथ, प्रभ हैज गॉट 0. कोई बात नहीं बेटा, लाइफ है, होते रहता है. लाइफ इज नॉट फेयर. थोड़ा पढ़ाई कर लेते तो हो जाता. अब पढ़ लो. एंड आप लोगों का जो भी एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है, जब ये आप लाइव का वापस से प्री रिकॉर्डेड देखोगे, मतलब रिकॉर्डेड सेशन देखोगे, तो जो रॉन्ग हुआ था उसको कहीं लिख के रख लेना. ठीक है? कि आप एग्जाम में उसको रॉन्ग करके ना आ जाए.
लवली लवली। चले आगे बढ़े। एक्ट 3 सीन 3। What does the second murderer observe about Banquo's habits as they wait for his arrival? बैंको के साथ बाकी सारे नोबल का एक रेगुलर, एक कस्टमरी थिंग क्या था? It was a customary thing to do that for a up to a mile, याद करिए, up to a mile people usually reduced down to their walk, like they get off their horses and they walk. ठीक है? So most of the guests walk the last stretch of the palace while their horses are led away. So their walk, matlab their moving forward is reduced down to walk. कोई बात नहीं बेटा, प्रभ, गुड गुड, 9 मिला है, then you're on the right track. चलो, what is the significance of the light being struck out during the attack? And मैंने ये भी देखा है बच्चे लोग क्या बोलते हैं, प्लीज put off the fire. That is incorrect. हाँ, put off नहीं होता है, you always put out the fire. That is why यहाँ लिखा है struck out is the phrasal verb. That means extinguish, बुझा देना. ठीक है, चलिए क्या होगा? Lovely, amazing. It symbolizes the physical and moral darkness descending on Scotland. Scotland has completely gone into moral and physical blindness, darkness, okay, into a gloom, into disorientation. Chaliye. In the context of the play's plot, why is escape of Fleance considered as a turning point? Fleance's escape is considered as a turning point. Why? Because very good, Madhav. I think Madhav is the first one to answer. Lovely. And then Game Pro, then Devansh, then Arav. Lovely, 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 lovely. It marks the first time Macbeth's plan has not been fully successful. He has failed to accomplish or to overthrow a part of witch's prophecy, and Fleance's escape allows the part of witch's prophecy to remain intact and true, indicating, highlighting that the forces of supernatural or evil entities ka predicament, they rise from a higher authority or hierarchy which is beyond Macbeth's control. ठीक है? Next one. We have lost best half of our affair. What does the statement by the second murderer reveal about their mission? Very good. Macbeth had specifically mentioned that Fleance ka murder is equally important to him. And since they have failed to do so, they realize, they acknowledge this fact that Fleance was more important target for Macbeth's future. Because Macbeth had particularly mentioned about Fleance. Next one. Which of the following best describes the atmosphere created in this brief chota sa scene? Brief is short. ठीक है? Very important question from your ISC perspective. What kind of atmosphere is being created through this brief scene? Lovely. Lovely, lovely, lovely. Atmosphere is tensed. Tense को आप shifting भी बोल सकते हो. Another synonym. It is chaotic and it is predatory.
although Macbeth is not present here, but through murderers he's trying to prey upon both father and son. ठीक है? And last one, what is the primary dramatic purpose of Act 3, Scene 3? What is the dramatic significance of the scene? Very good, very good. To show the death of the major character and failure of Macbeth's attempt to prevent the prophecy. ठीक है, to stop or to prevent the prophecy. His attempt to overthrow or supersede the prophecy has been futile, has been useless. ठीक है, चलिए मार्क्स बताइए कितने आए आउट ऑफ 10? हाउ मच? नॉट 10, सॉरी, टोटल है 6, माय बैड. आउट ऑफ 6 हाउ मच? क्या भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? 6 मार्क्स से आप लोग सब 10 ऑन 10 लिख रहा है, 6 ऑन 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? चलो वेरी गुड, 5-4 मेजोरिटी, मतलब अच्छा प्रेपरेशन है. चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. द लास्ट सीन ऑफ एक्ट 3, scene 4. At the beginning of the banquet, start of the banquet, Macbeth says, ourself will mingle with the society and play the humble host. What irony, what is ironical about the statement, in this particular statement? When he says that I'm going to play the most humble host, then ironically he is the one who has, very good, who has dug the ditch of Banquo's corpse. ठीक है? He has just ordered the murder of his best friend. That is ironical. Lovely. When the first murderer appears at the door, Macbeth's remarks are, there's blood upon thy face. To which the murderer responds, tis Banquo's then. How does this exchange function symbolically? ठीक है? What is symbolic of blood? The motif of blood imagery here. Very good. The blood that he is talking about, it is just in a moment about to be manifested in the form of Banquo's ghost. So it is the transformation of Macbeth's guilt from the internal feeling to the external reality. Since he's talking about blood and violence, automatically it gets manifested in the form of Banquo's ghost. ठीक है? Upon hearing that Fleance has escaped, Macbeth claims he is cabined, cribbed, confined, and bound, means again locked into saucy doubts and fears. In simple words, apprehension. Which of the following explains this metaphor? Very good, very good, very good. He feels trapped and locked, cabined, confined, suffocated, owing to the prophecy associated with Banquo's lineage. ठीक है? चलिए, fourth one. Why does Macbeth say to Banquo's ghost, thou canst not say I did it, never shake thy gory locks at me? Very good. Muhammad Mustafa Arush. Very good. Very good. First and the second one to answer. Lovely.
because he hired assassins and did not physically kill Banquo himself. So basically, he is making an attempt, he's trying to shift the guilt onto the murderers. He doesn't want to take the charge of having pronounced Banquo's death sentence. Okay? Next one. How does Lady Macbeth attempt to man Macbeth? Are you a man during his breakdown at the table? How does she question Macbeth's manhood? Very good, very good. By saying that, whatever you are saying, she mocks that by saying and comparing his vision, his hallucination to that of a story of a woman at a winter's fire. Take care of that idiotic or stupid, scary story. And at the same time, she also compares it with that of the visionary dagger which he had created while Duncan's murder. Take care. Please remember that as well. Which of the following statements reflect Macbeth's shifting perspective on the supernatural during the scene? Very good. Shifting perspective क्या है? Macbeth का perspective is shifting. That is, he has started to believe that the dead will no longer stay buried to keep their secret. They will come out of their grave and spread the dark deeds which had been committed. ठीक है? They will pronounce Macbeth's dark crimes. Lovely. After the guests leave, Macbeth says, "It will have blood." They say, "Blood will have blood." What does this reveal about his psychological state? It is a broken psyche of his. ठीक है? What does it say about his psychological state? Very good. He realizes this fact that in order to maintain his position, his illegitimate position, he needs to commit more violence, foreshadowing onto his further moral decay. Take care. Further violence which is necessary to reign, to rule. Next one. Macbeth notices the absence of which specific noblemen at the banquet? Who is absent and which leads to further suspicion? Macbeth suspects this person, that this person could be a potential threat. Lovely. It is Macduff. ठीक है? Macduff, upon Macbeth's order, he had summoned Macduff, but he failed to attend the royal dinner, the feast, owing to which he feels a little suspicious about Macduff as well. And therefore, by the end, he decides to go and pay a visit to the Weird Sisters. Macbeth mentions, "There's not a one of them, but in this house I keep a servant feed." What does this reveal about Macbeth's reign? I keep a servant feed यानी all of them are bribed. मैं सबको bribery देके keep a servant feed so that they can spy for me. They are Macbeth's secret spies. Very good. Very good. Under Macbeth's rule, everything, not just him, but even his subjects and his people are paranoid, and there is a lack of trust in the country. No one can trust anybody. And at the end of the scene, Macbeth says, "I am in blood, stepped in so far that should I wade is basically walking, slow walking, no more. Returning were as tedious, means as cumbersome, as tiring as to go over, to go further."
What is the significance of this river of blood imagery? Very good. Since returning back is going to be as equally tedious as moving further, so he decides that चलो एक काम करते हैं, वायलेंस को ही अक्नॉलेज कर लेते हैं, क्योंकि वायलेंस से एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कम से कम एक अटेम्प्ट तो हो जाएगा, पता तो चल जाएगा कि आई विल बी एबल टू मेंटेन माय पोजीशन और नॉट. ठीक है, चलिए बताइए कितना आया आउट ऑफ 10? हाउ मच डू यू स्कोर? लवली, लवली, वेरी गुड अंश, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड देवांश, वेरी गुड लीनाथ, वेरी गुड प्रभ. चलो, good one, good one. Let's proceed ahead with scene 5. Oh sorry, mistakenly I had said that last scene. नहीं नहीं, दो और scene है till scene 6, छोटे छोटे हैं. Act 3 scene 5. Why is Hecate angry with the three weird sisters at the beginning of the scene? She scolds, she chides, she scoffs at the three weird sisters. Why? Because without Hecate's permission, how did they dare to trade with Macbeth in riddles and prophecies without her consent, when she is the mistress of their charm, the sorceress and the close contriver of all harm? मैंने इतना मैकबेथ पढ़ लिया और पढ़ा लिया है कि अब मेरे को लर्न ही हो गए लाइंस. ठीक है, जहन में मैकबेथ दौड़ रहा है. चलिए, हाउ डज हेकेटी डिस्क्राइब मैकबेथ्स कैरेक्टर इन दिस सीन? She addresses Macbeth as a very good, as a wayward son, as self-centered and selfish man who loves only his own whims and desires. ठीक है? He is highly ungrateful to whatever witches have done for Macbeth. चलिए, next one. What is Hecate's primary plan for Macbeth's next visit? Hecate क्या बोलती है? Upon the pit of Acheron, this guy is going to come and I am going to go and prepare for. Very good. She intends to conjure artificial spirits, in other words, apparition. Three apparitions, which are going to lead Macbeth into further confusion and seal his tragic fate. Please use this in your answer. ठीक है, seal his tragic fate. I hope you all are sitting with a copy. Seal his tragic fate. Got it? चलिए, next one. According to Hecate, what is mortal's chiefest enemy? अब ठीक है, मैंने कुछ कुछ बीच बीच में easy भी drop किए, but आ ही सकता है ना. Easy questions can also come. It's not like हमेशा tough ही करना है. So yeah, what is mortal's chiefest enemy? Security. And what is security associated with? Over confidence. And आपको एक moral advice, just because you're scoring 10 on 10 in MCQs, and if you have got good marks in your pre-board examination, be little modest, be humble. Don't let it corrupt your mind कि मुझे सब आता है. The moment you think मुझे सब आता है, there is a very high chance you will falter. So keep re-revising again and again. ठीक है? Don't be overconfident. चलिए, next one.
What does Hecate intend to do with the vaporous drop profound which hangs upon the moon? So before it drops, I'm going to go and catch it so that she can use it. Very good. She is going to use that to conjure or create some illusions, some bhram, which will make Macbeth feel invincible. Invincible means utterly powerful. He'll feel that no one can overthrow him. He is immortal, he is indestructible. Invincible could be indestructible. ठीक है कि कोई उसे हरा नहीं सकता है. चले आगे बढ़े. And you all know security is mortal's chiefest enemy. What does Hecate mean by the word security in this context? ये आया क्वेश्चन. वो तो था आइडेंटिफिकेशन के कौन सा वर्ड लगेगा. यहां है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. दैट इट इज अ फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी और ओवर कॉन्फिडेंस. ठीक है. चलिए, बेस्ड ऑन एक्ट 3 सीन 5, हाउ डज द रोल ऑफ फेट चेंज इन दिस पर्टिकुलर प्ले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएससी के पर्सपेक्टिव से. What is the role of changing fate in this particular scene? Very good. Although Macbeth thinks that he is the one who's going to take charge, but he is oblivious, he is ignorant of this fact that he is being manipulated by supernatural entity and forces. That is the role of fate. ठीक है. Which of the following best describes the tone of Hecate's dialogue? The way she speaks. I hope आपको पता है. She is more, एक वर्ड अगर मैं बताऊं, she is more outspoken. अब इस outspoken को आप कितना synonym या adjective में तोड़ सकते हो? Lovely, lovely, lovely. अब्दुल रहमान, गेमर प्रो, सिरोथिया अनुष्का, नाइस. टॉप 3 फटाफट आंसर किया इन्होंने. शाउट आउट दे दिया. चलो, अथॉरिटेटिव एंड मीनिंग. मेनेसिंग. मेनेसिंग इज बेसिकली थ्रेटनिंग. ठीक है. मेनेसिंग इज थ्रेटनिंग. शी इज इशूइंग अ डायरेक्ट और एन एक्टिव वार्निंग. What does the inclusion of music and song in this particular scene, in the stage directions of the scene, signify about the witches? What is the purpose of that music and song which is used in this particular scene? Yes, to indicate of the eerie deed, the rituals which will follow later of the supernatural world. ठीक है. ऑप्शन सी. लवली, लवली. चलिए बताइए, आउट ऑफ 9 कितना आया? How much did you all score out of 9? Very good, very good, very good. Yes, dear, I will make a video on how to write answers. Don't worry. और आपको आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपरली, मतलब जो क्वेश्चन मेरे सैंपल पेपर्स में है उसका आंसर चाहिए. वहां तो आंसर की डाल ही दिया है, बट जब 7th को लाइव होगा ऑफ कोर्स हम लोग गिव रीजंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. उसके अलावा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का किस की पॉइंट के आसपास आपका आंसर रिवॉल्व करेगा वो भी आपको लिखवा दिया जाएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन का मेन आइडियाज जो बोलते हैं मीट, the meat you get it, you just have to add sauce to it and then your food is ready to be served
in the examination. ठीक है? अरे बेटा हर चीज वाईटी पे अगर करेगा. हाय मिर्जैन सिया, दे यू गेट योर शाउट आउट. ठीक है, चले आगे बढ़े. नेक्स्ट वन, लास्ट सीन ऑफ एक्ट 3. What is the primary tone of Lennox's opening speech when discussing Macbeth's recent noble deed? And this noble is sardonic. सिंपल भाषा में बोलूं तो sarcastic. ठीक है, very good. He makes use of, very good, he makes use of biting irony. Please use it in your answer. Lennox's speech drips in sarcasm and he makes use of biting irony, bitter sarcasm and suspicion. How does Lennox describe the death of Banquo to the anonymous? Anonymous यानी unknown, नहीं जानते वो कौन था, जस्ट उसका नाम लॉर्ड था. ठीक है, to this anonymous lord. Lovely. नहीं 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 नहीं, आप क्वेश्चन का हेलो 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 गाइस, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड. वन सेकेंड, पे अटेंशन. हाउ डज लेनेक्स डिस्क्राइब द डेथ ऑफ बैंको? बैंको कैसे मर, मतलब डिस्क्राइब द डेथ ऑफ बैंको का मतलब ये नहीं कि बैंको को किसने मारा, ये नहीं बोल रहा है. बैंको किस कारण से मरा, फोकस ऑन दैट. इट इज नॉट हु किल्ड बैंको, it is why Banquo's death took place. Got the logic? What was the reason? So it goes that it was monstrous. It was monstrous that Banquo has been killed, and it happened because Banquo walked too late at the evening. And then it is like he says, for once we can consider that maybe Fleance killed Banquo. बिकॉज मैकबेथ वॉज द वन जिसने बोलते हैं ना करप्ट किया था, ये बोल के बाकी लॉर्ड को कि डंकन को शायद पॉसिबली मैल्कम एंड डोनाल्बेन ने मारा है. दे हैव कमिटेड द सिन ऑफ पैरासाइड. सो वही वो सेम चीज को एक बार कंसिडर करके तोड़ मरोड़ मरोड़ के जोड़ने का कोशिश कर रहा है. ही इज नॉट एग्जैक्टली श्योर. ठीक है, गॉट द लॉजिक? वेरी गुड लीनाथ. आया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बी होगा इसका ऑप्शन. Got it? Chalo. Next one. According to the Lord, where has Macduff gone and for what purpose? कहां गया है Macduff and किस लिए? Lovely. To the English court to seek military aid from King Edward. ठीक है, lovely. शिवम बेटा प्लीज बी स्पेसिफिक. शिवम सिंह, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो. चलिए नेक्स्ट वन. बी कॉशियस, स्टेटमेंट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है. व्हाट डज द लॉर्ड reveal about current state of Scotland under Macbeth's rule? Very good. People are living in doubts and fear, and they lack sleep, and there is a lack of peace.
ठीक है, द सोशल ऑर्डर ऑफ स्कॉटलैंड हैज इन्वर्टेड, उल्टा हो गया है, सो दैट मेक्स ऑप्शन ए योर करेक्ट वन, ओनली पी एंड आर। ठीक है, लवली। चलो नेक्स्ट वन, हाउ डिड मैकबेथ रिएक्ट व्हेन मैकडफ रिफ्यूज्ड हिज इनविटेशन टू द बैंक्वेट? कैसे रिएक्ट किया मैकबेथ ने? इसको अलाइन करना है पुराने सीन के साथ, वहां से जोड़ो। मैकबेथ ने मैकडफ को बुलाया था, मैकडफ नहीं आया तो उसने किसको भिजवाया? फिर आप लोग गलती कर रहे हो। आप एक्ट 3 सीन 6 कर रहे हो, एक्ट 3 सीन 6 कर रहे हो, उसके हिसाब से अभी एग्जीक्यूशन अनाउंस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जब वो एक्ट 4 सीन 1 में जाएगा, विचेस से मिलेगा, 3 अपैरिशंस उसको ग्रीट करेंगे, जहां पे पहला अपैरिशन उसको बोलेगा बीवेयर मैकडफ, तब वो प्रोनाउंस करता है दैट आई नीड टू वाइप आउट द एंटायर फैमिली ऑफ मैकडफ। डोंट गेट रॉन्ग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। He sent a messenger, and upon being snubbed means ignored, he began preparing for a war। ठीक है, that is snubbed, ignored। बेटा फॉर ग्रामर देयर इज नो सेपरेट कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन माय एप्लीकेशन। निर्भय बैच था, लेकिन उसका भी अब एनरोलमेंट हमने क्लोज कर दिया है। निर्भय का एनरोलमेंट हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, दैट्स योर लॉस। ठीक है, बाकी जितना होगा ग्रामर का मैं यहाँ यूट्यूब पे लेके आऊंगा, मैं करवाने का कोशिश करूंगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको इकोनॉमिक्स के लिए निर्भय में आना है तो आप आ जाइए। जितना पढ़ा दिया गया है उसका जो भी बैकलॉग है उसको क्लियर करिए। हेलो, ऑडिबल अब आ रहा है? ऑडिबल 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 ऑडिबल, यस। चलो 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 चलो। What does the Lord mean when he refers to Malcolm as the son of Duncan, from whom this tyrant holds the due of birth? Very good. That Malcolm is the rightful heir whose throne Macbeth has stolen. Good one. Next one. Which of the following best describes the holy king mentioned in this particular scene? Who is Macbeth being contrasted with? Very good. King Edward. ठीक है, Edward the King of England. Swift blessing may soon return to this our suffering country under a hand accursed. What does this quote reveal about speaker's feelings? Shout out to Avish. Speaker's feelings. A hope for restoration of their accursed country. ठीक है, a hope for the divine intervention. That is, may God intervene and save their country from Macbeth's tyranny. ठीक है.
What is the significance of Act 3, Scene 6? Dramatic significance क्या है in the overall structure of the play? Act 3, Scene 6 का purpose क्या है? What is the main purpose? हाँ, क्या बोल रहा है आप लोग? सोच के बोलिए. Hi Aryan, shout out to you too. What is the dramatic significance? Purpose क्या है? कॉमिक रिलीफ दे रहा है ये सीन. क्या आप बोल रहा है? द सीन इज सपोज टू प्रोवाइड कॉमिक. नो. This scene is supposed to serve as a bridge to show shift from the internal suspicion. अभी तक लोग को शक हो रहा था, वो लोग अपने अंदर तक रख रहे थे. अब they regard Macbeth as a tyrant openly. That too, Macbeth को tyrant बुलाया गया है openly. So it's an open revolt which is brewing. ठीक है, चलो फटाफट से मार्क्स बताइए. कितना आया आउट ऑफ 9? कितने मिले? वेरी गुड लीनाथ. वेरी गुड, वेरी गुड. लवली. चले आगे बढ़े. लेट्स मूव टू एक्ट 4 सीन 1 नाउ. आ जाइए. स्टार्टिंग विद द विचेस सीन वेयर द वियर्ड सिस्टर्स along with Hecate appear for one last time. ठीक है. What is the first ingredient in the witches? First ingredient the witches throw into the cauldron in Act 4, Scene 1. See, even though very rare of a chance for this question to come in your examination, but you never know कि कोई एक ingredient को उठा के पूछ ले आपको और आपका 100 मेकर ब्रेकर हो जाए एक ही बार में. So सोच समझ के बोलिए. सबसे पहले क्या गया था? It was a frog which had hibernated for 31 days under a cold rock. ठीक है. A toad which had sweltered, which had oozed poison, sweltered venom for 31 days. That will be your correct one. चलिए. How does Macbeth address the witches when he first encounters them in the cavern? Cavern means cave. ठीक है. Where is the scene taking place? At the pit of Acheron. Please remember that. लाइन को याद करिए. टेक्सचुअल. हाउ नाउ यू मिडनाइट डार्क हैग्स अगली विदर्ड क्रीचर्स एंड डिमांड आंसर्स. ठीक है. What does the first apparition, the arm head, warn Macbeth about? इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. To be cautious. Worry means cautious. Of whom? Of Macduff. ठीक है. The Thane of Fife. Beware Macduff, beware the Thane of Fife. In the context of the second apparition's prophecy, what does bloody child represent? Who is a representation of this bloody child? सोचिए, विचारिए. एक बच्चा है जिसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है. वो कौन है? Very good, very good. He is Macduff himself, who was untimely ripped. Untimely means prematurely. ठीक है. He was prematurely ripped. Ripped means taken out from his mother's womb. ठीक है. Prematurely born. ठीक है. और in other words, he was cut off from his mother's womb prematurely.
Fifth one, which of the following condition must be met for Macbeth to be defeated according to the third apparition? Macbeth shall not be vanquished till the woods of, याद आ रहा है line? Very good, very good. Till the woods of Burnham march to the Dunsinane hill. ठीक है, that was the third prophecy. चलिए next one. What is Macbeth's reaction to the prophecy that none of a woman born? Macbeth का reaction कैसा है? None of a woman born shall harm Macbeth. How does he react? Very good. He gets blinded by a false sense of security and arrogance that no one will be able to overthrow him. He gets trapped. He gets snared into the witches. हाँ ठीक है, good. ठीक है. He gets snared by the witches into their trap. Chaliye, what does the show of 8 king followed by Banquo's ghost symbolize? Symbolic significance of the 8 kings followed by Banquo's ghost, with the last one holding a mirror in the hand. Very good, very good. The long line, the never ending or unending line of Banquo's descendants who will reign means who will rule. ठीक है? Who shall rule the throne. After seeing the vision of the 8 kings, what does Macbeth mean when he says, "Thy crown does sear mine eyeballs"? Sear means it pierces. It pierces. It stings my eyeball. Very good. It aligns with painful. He feels deeply agonized. Agonized yani his hopes are shattered. At the same time, he feels aggressive. So mix of shattering hopes and aggression is agony. ठीक है? Agony is basically used for burning desire. जलन होती है जब आपको, तब हम लोग agony यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट वन. Upon hearing Lennox that Macduff has fled, run to England, what does Macbeth resolve? Resolve का मतलब क्या होता है? Determined. वो क्या मन बनाता है करने का कि मैं ये करूंगा. हाँ, यहां पे जाएगा absolutely. यहां जाएगा that immediately I am going to get Macduff's castle invaded, break into Macduff's castle. I'll send for hired assassins into Macduff's castle, and then his wife and his children shall be eliminated. In other words, they shall be swooped. Swooped मतलब क्या होता है? They shall be killed. ठीक है? Swooped, eliminated, killed. Chalo, last one. The very first lings of my heart shall be the first lings of my hand. What does this quote reveal about Macbeth's character development in Act 4? How has he developed as a character? लाइन याद करिए, मैंने पढ़ाते पढ़ाते क्या बोला था? Once a hesitant murderer transforms into a ruthless tyrant. Cold, calculated, ruthless tyrant. अगर आपने मेरा YT का लेक्चर्स फॉलो किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है? He has abandoned all hesitation and will now act immediately on his impulse. चलिए लगाइए ताली वहां पे, एकदम दिलों की वर्षा कर दीजिए. अगर आपको मजा आ रहा है, प्लीज सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट. इसकी एकदम वर्षा कर दीजिए.
एंड जल्दी से मुझे बताइए आपको कितना मार्क्स आया आउट ऑफ 10? लवली, लवली, लवली। अमेजिंग, अमेजिंग। चलो आगे बढ़े सीन 2 के तरफ। क्या आपको पता भी चल रहा है कितना जल्दी जल्दी हमारा होते जा रहा है? कितना जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर ले रहे हैं, हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा है ना? मजा भी आ रहा है। चलिए एक्ट 4 सीन 2, आपको क्वालिटी क्वेश्चंस भी देखने मिल रहे हैं। हाय कल्पित गुप्ता, शाउट आउट टू यू। चलो, what reason does Ross give to Lady Macduff for her husband's sudden departure to England? Very good, very good, very good. He claims that he does not know the reason but insists that Macduff is, no matter what, he is wise of a man. ठीक है? He will not do anything out of impulse. Chalo. How does Lady Macduff define a traitor during her conversation with her son? Who is a traitor? Textual है, textual reference. Someone who swears. Very good. A traitor is the one who makes a promise and then eventually breaks it. Hi, shout out to Nidhar Sana. Good one. चलो अब shout out बंद करो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो मेरा दिमाग हो जाएगा खराब. One that swears and lies. ठीक है? One that swears and lies. Why does Lady Macduff compare her husband to the poor wren? It's basically a pitiable bird, छोटा सा little wren. wren का picture खोल के गूगल पे देख सकते हो. In her dialogue with Ross, when she's exchanging words with Ross, she compares Macduff to wren. Wren is the most diminutive of a bird, very weak, frail, fragile, yet it tries to protect her offspring from owl. ठीक है, ये कंपैरिजन किया गया था to highlight the lack of the natural touch in protecting its nest against the owl. Lovely. What is the son's reaction to his mother's statement that honest men are those who hang liars and swearers? Very good. Very good. Very good. He brings out the reality that liars are far outnumbered than honest men and they can easily overcome them. ठीक है? So honest men are fool. Fifth one, what is the purpose of messenger's arrival in this scene? Why does a messenger arrive? क्या करने के लिए? लवली मनोज जोशी, लवली. अब 100 और 100 आप ही को आएगा. चलो, what is the purpose of messenger's arrival in this scene? To warn, है ना? Inform, correct? To inform Lady Macduff of approaching danger and urge her to flee, to run away ASAP, as soon as possible. I am, next one, I am in this earthly world where to do harm is often laudable, is praised, and to do good sometime accounted as dangerous folly.
What does this reveal about Lady Macduff's perspective? She understand that Scotland का हालत is such, Scotland ऐसे slippery position पे है कि यहाँ पे कुछ भी करना गलत ही consider हो जाता है. So the peace, the sanity, yes, and the order, moral, social, ethical order of Scotland has reversed. It has inverted. ठीक है? Inverted का मतलब क्या हो गया? उल्टा, उल्टा हो जाना. That is inverted. चले आगे बढ़े. Which of the following best describes the character of Macduff's son as portrayed in the scene? उसकी बातों से, उसके चाल ढाल से क्या समझ में आता है कि वो कैसा है? छोटा सा पिद्दी, पिद्दी सा लड़का होके इतना कुछ बोलता है वो. So Lady Macduff calls her, "You prater, look at the way you talk." Right? Yes, he is witty and he is fiercely means very aggressively loyal towards his father's reputation. He tries to defend his father before his mother, at the same time in front of the hired assassins when they come, and accuse Macduff of being a traitor. Yes, he's like chota packet bada dhamaka. Very good. Chalo. What is the first murderer's immediate reaction when the son calls him, "You shag-haired villain, you long head"? नहीं होगा, ये actually eared होगा. ठीक है? It is eared actually. I think there's a typing error in the book. तो मैंने वहीं से ही लिया है, but ठीक है. You long-eared villain. What is the purpose of that? फर्स्ट मर्डरर का इमीडिएट रिएक्शन क्या है? वो तुरंत उसको स्टैब कर देता है. वेरी गुड. ही स्टैब्स द बॉय एंड कॉल्स हिम, "You young fry of treachery, you young son of a traitor, you smolly of a traitor." Treachery means someone who's a traitor, and traitor means धोखेबाज. ठीक है? Traitor is someone who's धोखेबाज. Got it? चले आगे बढ़े. गद्दार. Yes. Number 9. In the context of tragic arc means a complete cycle. ठीक है? Complete cycle of the tragedy, arc of the play. What does the slaughter of Macduff's household represent? ध्यान से, be cautious इस क्वेश्चन में. अच्छे से पढ़ो, फिर आंसर दो. Don't be in a हड़बड़ी. पढ़ लो. Take your time, read, and then choose the correct one. पूरे मैकडफ के फैमिली को जो स्वूप किया है उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है इस सीन से? क्या मैकबेथ ट्रांसफॉर्म हो चुका है पूरी एक पॉलिटिकल असैसिन में, लाइक अ टायरेंट जो कि बिना किसी वजह के मार देता है लोग को? यस, ही हैज. क्या इट इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द नेचुरल टच एंड डोमेस्टिक सेफ्टी इन स्कॉटलैंड? यस, इट इज. क्या द सक्सेस ऑफ मैकबेथ्स प्लान टू सिक्योर हिज थ्रोन? नहीं, यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट का बात नहीं हो रहा है. The realization of second apparition's warning? No, it was first apparition's warning. So it is only P and Q. ठीक है? P and Q. Got it? C होगा. चले आगे बढ़े. चलिए next one. Which of these quotes from scene reflects the theme of fair? Is now very good question. Like this is a very good question. This is what ISC oriented question usually are.
फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, सीन 1 में किया था, उसका यहां पे कौन से डायलॉग के साथ अलाइनमेंट हो रहा है थीमेटिकली? सोच के बोलो। फंस गए आप, फंस गए आप, फंस गए आप। Whatever is fair to other people is foul to witches, and whatever is foul to witches is fair to them. Right? सोचो कि ये क्या है, ये सिमिलैरिटी कौन से डायलॉग में है? उसके पास पिता तो है लेकिन फिर भी वो फादरलेस है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। फादर्ड ही इज, येट ही इज फादरलेस। ठीक है, गॉट द लॉजिक? सो ये पहला के साथ अलाइन कर रहा है। ये थीमेटिकली नहीं पूछ रहा है, बट यहां पे डायलॉग का अलाइनमेंट का बात हो रहा है। गॉट द लॉजिक? पुअर बर्ड नेवर फियर नेट नॉर लाइन, तो उसका इमेच्योरिटी को लेके बात कर रहा है। आई एम सो मच फूल, शुड आई स्टे लॉन्गर? तो नहीं, ये तो रॉस का डायलॉग है। ही लव्स अस नॉट, ही वांट्स द नेचुरल टच, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फादर्ड ही इज, येट ही इज फादरलेस, ए के साथ जा रहा है। चले, बताइए कितना है आउट ऑफ 10? हाउ मच आउट ऑफ 10? कोई बात नहीं, गलत हो गया। लवली। चलिए, मूविंग टू एक्ट 4 सीन 3। टाइपो है, ये सीन 3 है। एक्ट 4 सीन 3 स्टार्ट करें। At the start of the scene, Malcolm remains deeply suspicious of Macduff, noting that a good, virtuous nature may recoil in an imperial charge. What does this reveal about the nature of power in the play? अब थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, ये पावर के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। He says that although you might be virtuous, Macduff, वो बोलता है कि हो सकता है तुम अच्छे हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि तुमको मैकबेथ ने बोला हो कि जाके लेके आओ। तुम चाहे जितने भी वर्चुअस हो, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान, कोई कितना भी वर्चुअस क्यों ना हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि करप्ट पोजीशन पे बैठा हो, इंपीरियल चार्ज पे बैठा हो, तो अच्छा इंसान भी रिकॉइल कर सकता है। रिकॉल यानी करप्ट बन सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन बी, दैट इट कैन करप्ट इवन द मोस्ट ऑनरेबल मैन, मेकिंग ट्रस्ट अ कैजुअलिटी ऑफ वॉर। नेक्स्ट वन, Malcolm tests Macduff by claiming that he is more lustful and avaricious. Avaricious means basically greedy, lalchi, than Macbeth. What is the primary purpose of this elaborate deception? Lovely. Very good. Very good. Very good. To ensure that whether Macduff's loyalty is to the well-being of Scotland or not, and he is not coming upon Macbeth's instruction. That is why he deliberately claims himself to be greedy and lustful. ठीक है? When Macduff finally cries out, "Oh Scotland, Scotland," and prepares to leave, Malcolm reveals the truth. What does Macduff's despairing outburst, to which he just bursts out, emotional outburst हो जाता है, represent? क्या बताता है? Always remember that Macduff was a true patriot. ठीक है, वो सच्चा देश
भक्त था, सच्चा देशभक्त था, एंड इसीलिए उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ अपने देश के लिए। हाँ, जब मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में तब आपको ठीक समझ आ जा रहा है। इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट, हिज इमोशनल आउटबर्स्ट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट टू द सेक, फॉर द सेक ऑफ हिज सफरिंग मदरलैंड। ठीक है, बोर्ड्स में आप मेरे को लेके नहीं जाएंगे, थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिए। रीड वेरी केयरफुली ऑल द क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, डोंट बी इन अ हरी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग एडवर्ड द कन्फेसर हीलिंग द इविल। इविल क्या है? बेसिकली इट वाज अ फॉर्म ऑफ कैंसर, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। इट वाज अ फॉर्म ऑफ कैंसर which was very painful. ठीक है, with his touch serve as a direct foil to Macbeth. Foil का मतलब होता है contrast. He stands as a direct contrast to Macbeth's character. This comparison essentially means, yes, Edward epitomizes or symbolizes that एक सच्चा राजा, a true monarch, monarch means king, always stands as a healer for his people, while a usurper, usurper यानी someone who's corrupt, जो धोखेबाज होता है, like Macbeth is a disease, वो और बीमारी फैलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसी लेवल के अब क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ अभी आपके बैच के लिए तो नहीं बनेगा, नेक्स्ट ईयर पता नहीं, नेक्स्ट ईयर 10% और इंक्रीज हो जाएगा द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन, तो अभी आप चिल करिए। फॉर you'll have to remember that for you guys 40% of your paper will be HOTS, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। अब जो बच्चे अपने ही डेलुलू में जी रहे हैं, डिल्यूजन में जी रहे हैं कि अरे भैया पेपर आसान आएगा, हम तो 7 तारीख से पढ़ाई करेंगे, हम तो 10 तारीख से पढ़ेंगे, 2 दिन पहले पढ़ के जाएंगे और हम लोग बहुत कुछ उखाड़ के ले आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वैसे बच्चों को छोड़ दो, वैसे बच्चों को कभी ना 90 आया है और ना कभी आएगा। जब पेपर इजी था तभी भी नहीं आया वैसे बच्चों को मार्क्स, और अभी भी नहीं आएगा जब पेपर टफ है। ठीक है, हाँ बेटा, देर आर जस्ट 5 स्टोरीज एंड 5 पोएम्स, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर यू आस्किंग? ये तो ऐसा हो गया कि पूरा रामायण समाप्त हो गया और फिर आप तो पूछ रहे हैं कि भाई सीता कौन थी, किसका हरण हुआ था, क्या कर रहे हैं आप? यू डोंट नो योर सिलेबस। चलो आगे बढ़ते हैं। Ross arrives and describes Scotland as a place where sighs and groans, that is pain, shrieks, shrieks का मतलब क्या होता है? Shouts, that rends the air, rends यानी that fans apart, or that flows, ठीक है, flows into the air are made but not marked, although it is heard, the cry of pain and anguish is heard, but then nobody takes a note of it. वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये क्या बता रहा है? दैट द कंट्री हैज बिकम अकस्टम्ड का मतलब होता है यूज्ड टू, इतना ज्यादा यूज्ड टू हो चुका है हॉरर से कि ट्रेजेडी नया नॉर्मल बन गया है, एंड कोई अब उसको नोट भी नहीं करता है, कोई ध्यान भी नहीं करता है। अच्छा ऐसा है कि कोई मर गया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, क्या बड़ा बात है स्कॉटलैंड में, ठीक है। Yes beta, if you are getting 2 or 3 MCQs wrong, then you just need to revise your keywords, your notes again and again. आपकी जगह अगर मैं होता, मैं एग्जाम के एक दिन पहले भी, लास्ट डे भी, एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 बार तो रिवीजन कर ही लेता प्रॉपरली, एंड जो मैंने लाइंस और कोटेशंस बनाए होते हैं उसको, ठीक है, 100 अगर लाना होता तो। No, there is no word limit to give reasons in literature. Ideally, you are expected to finish your give reason within 1.5 line to 2 lines. अब ऐसा नहीं, you're writing a half a page for a give reason, 1 mark. That is not allowed. ठीक है? There's no word limit as such. चलिए, moving to the next one. When Ross finally breaks the news of the slaughter at 5 के तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को मार दिया गया है, he says the words are to be whispered in the desert air, in an empty air. This
पोएटिक चॉइस हाइलाइट्स, ये क्या बताता है कि ट्रेजेडी वॉज सो घासली, इतना घातक था, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है कि कोई भी अगर सुनेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। The idea that such massive tragedy is way too heavy for the ears of men to bear in a civilized setting. ठीक है, rather they should go. Yes. चलो next one. Seventh, Macduff's reaction to the news. All my pretty chickens and their dam, all at one fell swoop, in one go. एक ही बार में they have been wiped out. He uses bird imagery, chicken and dam, that is chicken ki mother. How does this contrast with the falcon and owl imagery in Act 2? Falcon and owl in Act 2. As much harm as an owl can impose onto a falcon. That once upon a time, Macbeth, lovely, lovely, lovely. It shifts the entire imagery and perspective from predatory omens to vulnerable innocence, emphasizing the domestic horror of Macbeth's crimes. ठीक है योगा दीक्षित, डन। मैं आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एक दिन पूरा आके बैठ के बना के करवा दूंगा, ठीक है? डन 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 डील, हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो, करवा दिया जाएगा। अब फोकस करिए, ठीक है बेटा? ऑल दीज थिंग्स ना, राज, वट एवर योर नेम इज, आई राज दर्द, अजीब अजीब नाम है ये। आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है, मेरा एक वीडियो डाला हुआ है वेर आई हैव टेकन एन इंटरव्यू ऑफ मिसेस सबरवाल, very qualified, very experienced teacher and evaluator associated with ISC Council. Please go and watch that video out. 50 मिनट का वीडियो है लेकिन सब कवर अप किया है उसमें, मैंने सब पूछ डाला उनसे जितना हो सकता था। थैंक्स टू हर कि उन्होंने इतना टाइम दिया। अब उसको अच्छे से सुन लो, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? अगर आप 100 लेके आएंगे देवांश, तो अभी आपके लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आप निर्भय बैच के पार्ट नहीं है। निर्भय बैच में होते तो भाई आपको कैश प्राइजेस मिलता। आपको शायद पता भी नहीं होगा, क्या आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। निर्भय बैच के स्टूडेंट्स जो लोग निर्भय में है, इफ दे ब्रिंग 100 इन इंग्लिश, दे हैव बीन प्रॉमिस्ड कैश प्राइज 7,000 फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तीनों में अगर इको, कॉमर्स और इंग्लिश में तीनों में 100 आ गया तो 25,000 का कैश प्राइज बोला है मैंने उनको। चलिए, Malcolm tells Macduff to dispute it like a man. Dispute means fight it. Fight it like a man, to which Macduff replies, I shall do so, but I must also feel it as a man. Feel it like a man. This exchange is pivotal. Pivotal means it is important. ये बहुत जरूरी है, because यहां नैरेटिव कौन सा ब्रेक हो रहा है? Macduff acknowledges true masculinity lies where a man is able to embrace his emotion. A man who is true to his manhood will never try to suppress his or her emotion, his emotion. ठीक है? Got the logic? So क्या होगा? Macduff, he redefines masculinity to include empathy and grief as a part of man, challenging the stoic and violent version of manhood Macbeth embraces. According to Macbeth, he feels that I need to bear it like a man means a man is supposed to be full of strength and might and emotional space होना ही नहीं चाहिए एक man में. On the other hand, Macduff stands as a defiance to that. Please use it in your answer if a question comes to draw out a contrast between Macduff and Macbeth in terms of their masculinity. ठीक है? चलिए आगे बढ़े। Malcolm encourages Macduff
टू लेट हिज ग्रीफ बी द वेट स्टोन, बोलते हैं ना हम लोग, वेट स्टोन का मतलब होता है सिलबट्टा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जिसमें चाकू को घिस घिस के शार्पन, नाइफ को शार्पन किया जाता है, दैट्स वेट स्टोन टू योर स्वॉर्ड. Very good. He believes that personal tragedy should be converted into a sharp, focused, righteous anger to fuel revolution. ठीक है? To fuel the revolt, the change which they are about to bring. And the last one, the scene concludes with Malcolm stating Macbeth is ripe, fit for shaking, and the powers above put on their instrument. This signifies सीन का ओपनिंग और एंडिंग में कैसा शिफ्ट देखने मिल रहा है, कैसा चेंज देखने मिल रहा है, क्या चेंजेस आने वाला है, ओपनिंग कैसे हुआ, टेस्टिंग ऑफ लॉयल्टी से हुआ, कंक्लूजन कैसे हो रहा है सीन का, हाउ इज द सीन बीइंग कंक्लूडेड. The transition means change from the moral testing phase to that of justice phase. ठीक है, where the natural order is about to be restored and Malcolm coupled with Macduff is going to go and bite at Macbeth. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा खत्म. एक्ट 4 इज डन. पता भी नहीं चला आपको, एक्ट 4 हो गया. लवली. कितना आया 10 में, जल्दी बताइए अपने स्कोर्स को. हाउ मच? आई होप ये आ गया है अब. यू ऑल हैव गॉट दिस मैनिफेस्ट. मैनिफेस्टिंग मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबको. आप इतने अच्छे से पढ़ के जाओ दैट माई एंड मां सरस्वतीज ब्लेसिंग्स आपका 100/100 जैसे ही आप रिजल्ट खोलो आपको दिख जाए. ठीक है, लवली. जस्ट फॉर फन. लवली. चलो 1 मिनट का ब्रेक दिया जा रहा है. आई एम टायर्ड, मेरे को थोड़ा सांस लेना है. लेट मी ब्रीथ. ठीक है, लेट मी ब्रीथ. 1 मिनट आप भी सांस ले लो, पानी पी लो एंड देन कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, जस्ट 1 more minute. जस्ट 1 minute. चले शुरू किया जाए. बस बस हो गया आपका गॉसिप चैट डन. स्टार्ट करते हैं. चलो लास्ट एक्ट फटाफट से इसको करते हैं, देन आपको अलविदा करना है. बैठ के अकाउंटेंसी, साइंस ये सब भी करिएगा. ठीक है, चलो. एक्ट 5 सीन 1. व्हाई डज द वेटिंग जेंटल वुमन रिफ्यूज टू रिपीट व्हाट शी हैज हर्ड. दिस इज Lady Macbeth's sleepwalking scene where she says that I refuse to repeat anything
about Lady Macbeth sleepwalking. Why? टेक्सचुअल क्या था? वो बोलती है मैंने उसे स्लीप वॉकिंग करते हुए देखा है, मेरे साथ और कोई नहीं था, मुझे पता नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू कंफर्म दैट अंटिल अनलेस आई हैव अ witness to confirm my speeches. So she has nobody to confirm her report, and that is why she says that what she used to say in her state of slumber, please use this in your answer. State of slumber का मतलब होता है sleep, ठीक है, गहरी नींद, उसको स्लम्बर बोलते हैं. मैं नहीं बताऊंगी कि उसने क्या कहा है. चलो, enough, concentrate now, pay attention. What has Lady Macbeth commanded must be by her side continuously? उसके पास क्या होना चाहिए हमेशा? There should always be a burning. Very good, very good. There should always be a burning light, taper or a candle. ठीक है? So this stands as a stark contrast to once she had embraced darkness to come and unsex her and make her less of a woman. There is a reversal of the role in Lady Macbeth, where she was the dominating figure and force. Now she's become passive of her character. She's become submissive. She's become reserved. ठीक है? What specific action does Lady Macbeth perform repeatedly during her sleepwalking? क्या वो करती रहती है बार बार? डायरेक्ट क्वेश्चन है. What she does again and again. Very good, Devansh. Very good, Mahuya Rajak. I don't know whatsoever is your name. Good. She continuously washes her hand, mimics copying washing her hand. She tries to wash her hand. And meanwhile, she says, out, damn spot, out. ठीक है? She is mentally strained. Stained, not strained, sorry. Mentally stained. In the line, out, damn spot, out, I say, what does the spot symbolize? हाँ देखो, अभी बोल दिया मैंने आंसर. बोलते मैकबेथ मेरे को लर्न हो चुका है, आपको भी लर्न हो जाना चाहिए अभी तक. Very good, very good. It is the stain of guilt from the murder of Duncan. ठीक है? It is the moral stain and the internal stain that she undergoes. What does the doctor conclude about Lady Macbeth's condition? Doctor क्या बोलता है? वो किस way में troubled है? Is she physically troubled? The answer is no. She is inwardly or mentally troubled, and therefore she needs the blessing of a priest rather than a physician. ठीक है? Option D. What's done cannot be undone. She repeats all the speeches which she had said in the past. How does this quote reflect Lady Macbeth's mental transformation since Act 2? Act 2 के बाद अब वो कैसी बन चुकी है? अच्छा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को. प्रैग्मेटिज्म का मतलब अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, प्रैक्टिकल. ठीक है? Where she was practical of a person and now she has become despaired. Despaired is emotionally troubled or weighed down. So P तो जाएगा ही. It mirrors her earlier line. What's done is done, but within a shift with the dismissal to haunting realization. Her mind is aware of the sins which she had committed in the past. It reveals her hope, no hope. Hopes are shattered. It indicates she's planning. No, she's planning nothing.
सो दैट मेक्स P एंड Q एज योर करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. What does Lady Macbeth's mention of the smell of blood still lingers in my hand? And will the entire perfume of Arabia sweeten the smell of my hand? No, it won't. ये क्या indicate कर रहा है? What does it suggest about her psyche? Broken psyche, right? Broken, crippled mental state. Yes, now she has started to feel that उसका mental state इतना ज्यादा overwhelming हो गया है कि that internal trauma has started to externalize. कितना अच्छा लाइन बोला मैंने. Her internal trauma has started to manifest in the external form. It has started to externalize. बाहर आने लग गया है. ठीक है. चलिए. Why does the doctor tell the gentle woman to remove her from the means of all annoyance? Anything which she can use to self-harm herself, keep her away from those things. Thank you, Manjeet. Very good. Very good. क्या हो सकता है? Doctor fears that Lady Macbeth might commit suicide. ठीक है? She might end up killing herself. That is why he mentions that. Next one. Which of the following best reflects the tragic arc? Arc means cycle, completion. Demonstrate in this scene. कौन सा ट्रैजिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है इस सीन में? Anshika Jaiswal, I belong from West Bengal. Asansol is my town. अब पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा. I don't agree with those critics that some people say Macbeth was a third murderer. Could be possible. If he was, then how come he was startled when the first murderer came to the banquet scene, came during the banquet scene and informed Macbeth that Fleance has escaped, and he was bewildered, he was perplexed, he was astonished, he was flabbergasted, he was taken aback. So had Macbeth been third murderer, वो तो surprised होता ही नहीं. So I don't agree with the critic. ये खाली आपके concocted rumors है जो बनाए गए हैं. हाँ, Lady Macbeth supposedly being fourth witch is still possible because she embraces darkness. But मेरा conspiracy theory भी उसको लेके अलग है. ये हो सकता है कि Lady Macbeth could have been under the control of the witches rather than she herself being a witch. That could be a reason. But there are no written evidences of Macbeth plausibly being the third murderer or Lady Macbeth as the fourth witch. आपके मनगणत बोलते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अच्छा लगता है. आपका ब्रेन इज लाइक अ यूनिवर्स. आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, बट देन उसको हम लोग पेपर में उतार नहीं सकते विदाउट एविडेंस. ठीक है. अरे बेटा, मैल्कम बिकेम द किंग बिकॉज ही वाज द एल्डेस्ट सन. सो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट पहले वो किंग बनेगा, फिर बाद में फ्लियांस बनेगा, बट उतना दूर तक पहुंचता ही नहीं है. ठीक है. चलो, क्या होगा इसका? कम बैक टू एमसीक्यू नंबर 9. बताइए इसका आंसर क्या होगा? बस बोलते हैं ना, गड़बड़ करने का आदत हो गया है. ध्यान से समझो क्वेश्चन का. ए, डोंट बी इन अ हरी. डोंट बी इन अ हरी. क्वेश्चन को समझो. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स ट्रैजिक सर्कल या कंप्लीशन या साइकिल associated with Lady Macbeth in this scene? आप कैसे डॉक्टर का वार्निंग को बोल रहे हो? डॉक्टर का वार्निंग ट्रैजिक सर्कल है. लेडी मैकबेथ के बारे में बात हो रहा है तो डॉक्टर के पास कहां चले जा रहे हो? फोकस ऑन लेडी मैकबेथ.
कौन सा डायलॉग लेडी मैकबेथ का? वंस अपॉन अ टाइम वो क्या बोली मैकबेथ को? मैकबेथ को वो क्या बोलती आफ्टर डंकन्स रेजिसाइड? अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ आवर सिंस। देखो पानी से धो लिया एंड सी इट्स डन, हो गया खत्म। Why are you so afraid, Macbeth? And she questions Macbeth's masculinity. And now what is she doing? She is washing her hands. And in spite of continuously doing that for a quarter of an hour, that is 15 minutes, she is not able to come out of her troubled frame of mind. That makes option C a tragic arc on the part of Lady Macbeth. ठीक है? C is your correct option. I hope I am clear. समझ में आ गया आपको? Got the logic, guys? चलो, वेरी गुड। जल्दी से मार्क्स बताइए कितने आए आपको आउट ऑफ 9? हाउ मच? यहां पे एवरेज मार्क्स 6 और 7 है, मतलब आपका होमवर्क, मैं भी अभी आपका डॉक्टर हूं, आई एम योर डॉक्टर एंड डॉक्टर आर्यन प्रिस्क्राइब्स दैट sleep walking scene has to be done thoroughly. ठीक है, has to be done thoroughly. कितना बार? एटलीस्ट 3 to 4 गुड रीड ऑफ द टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छे से रीड करके फिर आप मेरे वाईटी रिवीजन लेक्चर के ऊपर जाएंगे। वहां पे जो क्रिटिकल एनालिसिस कराया गया है उसको आप कीवर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप अपने कॉपी में बनाएंगे स्लीप वॉकिंग सीन का कीवर्ड अच्छे से। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट सीन, एक्ट 5 सीन 2। अब सारे छोटे छोटे कम एमसीक्यूज है। हाउ डज केथनस डिस्क्राइब मैकबेथ स्टेट ऑफ माइंड एंड कंट्रोल ओवर हिज फोर्ट? फोर्ट मींस ओवर हिज ओन किंगडम। अनस्टेबल है उसका किंगडम। क्या होगा इसका? बकवास बंद, काम पे लगिए थोड़ा सा। क्या होगा इसका? वेरी गुड, ऑप्शन ए। ही डिस्क्राइब्स मैकबेथ एज बीइंग अ स्टेट ऑफ अ डिसटेम्पर्ड कॉज, मतलब ही इज इल टेम्पर्ड, he cannot fit his temper into his buckle, and calls Macbeth mad or lunatic of a person. ठीक है, that makes option A your correct option. चलो next one. Now does he feel his title hang loose about him like a giant robe upon a dwarfish thief? He's trying to fit into a position which he is not fitted for. What does it indicate? Very good, Ishika. Very good, Manjeet. Mahuya Rajak. Very good. I don't know how to pronounce your name. I don't know how to pronounce your name. Very good. Very good. Chalo. Macbeth is fundamentally, keyword is unfit. He is misfit. ठीक है? For the role of a king, because his title of a king is stolen. It is illegitimate. His possession is illegitimate. ठीक है, next one. What does Monteith suggest in the cause of Macbeth's pestered senses? Pestered means annoyed. Macbeth's sense is annoyed. Lovely, amazing. His own internal guilt for the unnatural things that he has done. ठीक है, that is what his pestered sense conveys. Who is referred to as the medicine of the sickly wheel? Who shall be that
purgative drug who can heal the country. Who shall be the healer of the country? Don't get confused over here. किसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है? बस आप लोगों का आदत हो गया है गलत बोलने का. यहाँ पे all the nobles of Scotland are planning to go and merge with the English army, which is being led by Malcolm and Macduff. Who should be the rightful heir to the throne of Scotland? Is it Edward? क्या एडवर्ड होना चाहिए राइटफुल हीलर? किसके राजगद्दी में बैठने से स्कॉटलैंड हील हो जाएगा? Who is that deserving or a fit king for Scotland? क्यों आप लोग गलती कर रहे हो? इट इज मैल्कम, ठीक है, नॉट एडवर्ड. मैल्कम, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस एमसीक्यू. ये आपका गलत हुआ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम. चलिए लास्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट स्कॉटिश थेन्स मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग मैल्कम? व्हाट ड्राइव्स द स्कॉटिश थेन टू ज्वाइन अलोंग विथ मैल्कम? क्या क्या कारण है? डिस्क्लेमर ध्यान से, हाँ, डोंट बी इन हरी. हड़बड़ी में गड़बड़ी. वेरी गुड अब्दुल, वेरी गुड सिद्रा शलीम, वेरी गुड खुशबू. चलो नाइस, दैट वाज क्विक, लवली. फर्स्ट वन इज टू पर्ज मीन्स टू हील द सिकली स्टेट ऑफ स्कॉटलैंड. एक तो है, हाँ भाई देश का हालत खराब है, देश को बचाना है. एंड देन दूसरा, टू सीज पावर फॉर देमसेल्व्स. नो, अपने खुद के लिए कुछ नहीं करना है. रादर टू रिस्टोर द सॉवरेन फ्लावर, द राइटफुल एयर, एंड ड्राउन द वीड्स. वीड कौन है यहाँ पे? वीड मैकबेथ है. फ्लावर कौन है? फ्लावर इज मैल्कम, ठीक है. सो दैट मेक्स ऑप्शन ए योर करेक्ट वन. ओनली पी एंड आर. टू अवॉइड बीइंग किल्ड, ऐसा कुछ बात ही नहीं हुआ है, ठीक है. लवली, लवली. चलिए, अच्छा मार्क्स तो पूछना भूल ही गया. मार्क्स बताइए, हाउ मच आउट ऑफ 5 कितने आए आपको? क्या भाई अब्दुल, 5 में भी तुझे 10 आ रहे हैं? ले भाई मेरा आशीर्वाद ले ले, तेरे को 5 में 10 आ जाए. चल तू 100 मार्क्स, तू 80 मार्क्स का पेपर लिख के आ, तेरे को 100 ऑन 80 आ जाए. 80 ऑन 80 की जगह जा. लवली, लवली. चलो, मूविंग अहेड. Act 5, Scene 3. Why does Macbeth dismiss the report of the deserting Thanes and at the start of the scene? He says, now there are some people who have left my side. Fly, fly. I forgot the dialogue. Fly, fly. Traitorous men या something like that. कुछ तो था ऐसा बोला गया था. बस खत्म ही होने वाला है. Scene 3 हो गया. 4, 5, 6, 7, 8, 5 सीन और आज ही रैप अप कर देते हैं, ठीक है. छोटे छोटे सीन्स है, 5 एमसीक्यू ही है, ज्यादा नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. He relies on the prophecies that no man born of a woman can harm him. He is still consumed by his arrogance and his false sense of invincibility that until and unless any man who's born of a woman comes and confronts him, he shall not be overthrown. ठीक है. How does Macbeth treat the servant who brings news of the English force? गालियां देता है उसको. हाँ, fly, fly, false things. Correct, लीना. Fly, fly, false things. चलिए नेक्स्ट वन. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बुलाता है उसको? Thou lily-livered boy. Now, what do you mean by lily-livered? Someone who has pale livered. Basically, it marks cowardice. ठीक है, जो कमजोरी का निशानी होता है. That is lily-livered boy. Cowardice, way-faced.
ठीक है. In his yellow leaf speech, his यानी किसका? Macbeth का. Macbeth says he compares himself to that of a yellow leaf. What does Macbeth realize he has lost? क्या खोया है उसने? By walking onto the path of tyranny. Very good. His old age should have accompanied with honor, with love, with obedience, which he lacks now. And he becomes a nihilist. Please use this in your word. What is the meaning of nihilist? Nihilist is a person who considers life is purposeless and is meaningless. ठीक है? There is no taste which is left in life. मतलब जिसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है उसको हम लोग निहिलिस्ट बोलते हैं. So it did not matter whether Macbeth stays alive or if he dies, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बुढ़ापे में जो आना चाहिए वो उसके पास है ही नहीं. ना रिस्पेक्ट है, ना लव है, ना ओबीडियंस है. ठीक है. He's become pessimist. Very good, Gothify. Pessimistic. ठीक है. चलो आगे बढ़े. What does Macbeth ask the doctor to do for Lady Macbeth? मेरी पत्नी को बस ठीक कर दो. I don't care how. ठीक कर दो. Very good. To find some drug which can purge. Purge means which can put oblivion into her mind. Oblivion का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा मेडिसिन लाओ कि वो बस उसको कंज्यूम करते ही सब भूल जाए. She herself just discards away all the troublesome thoughts which she is having. ठीक है. So to find some sweet oblivious antidote, that is medicine to cleanse her troubled mind. Lovely. Next one. Which of the following best describes Macbeth's mood shift throughout the scene? Macbeth ka. Yes. Airaj Darsh. When Macbeth says that throw the psychic to the dog, he means that throw the medicine to the dog, not the doctor. भाई डॉक्टर को कैसे कुत्ता को फेंक देगा? मेडिसिन को फेंक देगा. ठीक है. फिफ्थ वन क्या होगा? लवली. He moves from deep depression to becoming a maniac. Maniac यानी पागल हो जाना. And then, although he tries to maintain a facade, pretense of a false bravado. Bravado means bravery. आउटवर्डली ब्रेव दिखाने का कोशिश कर रहे हैं बट अंदर से उसकी हालत खराब है बहुत ज्यादा. ठीक है. What does Macbeth mean when he says I'll fight till from my bones my flesh be hacked? मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा. क्या आप लोग क्या एकदम कर रहे हो? अभी मैंने बताया निहिलिस्ट इज अ पर्सन who considers life is meaningless. तो अगर वो कंसिडर कर रहा है कि लाइफ इज मीनिंगलेस तो डिटर्मिनेशन कहां से बैठ रहा है निहिलिज्म के साथ? नो. आई विल फाइट टिल फ्रॉम माई बोन्स माई फ्लैश बी हैक्ड. वो क्या बताना चाह रहा है? इट इज ऑप्शन बी. ही इज प्लानिंग टू सरेंडर इफ द नहीं सॉरी. एक सेकेंड. ही इज एक्सप्रेसिंग डेस्परेट निहिलिस्टिक डिटर्मिनेशन टू फाइट. हाँ नहीं सॉरी माय बैड. भूल हो गया. इवन आई एम ओवर एग्जॉस्टेड इसीलिए ए ही होगा. सॉरी 6 का इट विल बी ए.
A. My bad, my bad, my bad. Oh, lovely. If it is a question of your pre-board. Lovely, lovely. Canst thou not minister to a mind disease? Can you not cure to a diseased mind? What does this inquiry reveal about Macbeth's own state of mind? उसका खुद का माइंड फ्रेम कैसा है? Although he is asking the doctor, to cure Lady Macbeth of her troubled mind, but again it is Macbeth who himself is troubled, right? So he is indirectly actually speaking about his own mental torment. Torment means trauma and torture and guilt. ठीक है? Next one. Which of the following reflects the tragic irony of Macbeth's situation in this scene? Now Macbeth का tragic irony को लेके बात कर रहा है. ठीक है, मैकबेथ का ट्रैजिक आयरनी को लेके बात हो रहा है. सोच समझ के बोलिए. सारे ही आयरॉनिकल है, बट मैकबेथ का ट्रैजिक आयरनी को लेके बात हो रहा है. आई एम रिपीटिंग अगेन, मैकबेथ का खुद का ट्रैजिक आयरनी को लेके बात हो रहा है. थिंक. नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो. ट्रैजिक आयरनी उसका, मैकबेथ का ओन ट्रैजिक आयरनी क्या है? ओन, हिज सेल्फ ओन. ये तो कंट्री का हो गया ट्रैजिक आयरनी. बी इज फॉर द कंट्री. देखो कीवर्ड को देखो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड का ट्रैजिक आयरनी. स्कॉटलैंड का तो हम बात ही नहीं कर रहा है. मैकबेथ का खुद का ट्रैजिक आयरनी का बात कर रहा है. समझ आया टीचर्स आपको कैसे ट्रिक करेंगे? काउंसिल आपका कैसा 100 ले सकता है? मतलब दिस कैन बी दैट वन क्वेश्चन जो आपका 100 मेकर 100 ब्रेकर बन जाता है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का. ठीक है. He feels physically safe because of the prophecy, but is actually mentally and socially completely isolated. That is Macbeth's own tragic irony. And option B is Scotland ka tragic irony, where he is asking Scotland to be cured and recovered, but he himself is the cause of the sickness. Please understand the context properly. This is why I emphasize reading is a must. And when you are reading, there would be some particular questions which might crop up in your head. You have to find answers to those questions which are being raised. अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? उस क्यों के पीछे जाइए. क्या हुआ है के पीछे मत दौड़िए, अदरवाइज आपको 100 नहीं आएगा. ठीक है, चलिए फटाफट से मार्क्स बोलो जल्दी से. आउट ऑफ 8 कितना आया? आई होप ये आया हो किसी का, बट कम ही चांस लग रहा है. लवली लीनत अहमद, लवली लवली लवली. 7 सी. देखा, अभी भी मतलब अगर आपको 7 और 8 भी आ रहे तो अभी भी थोड़ा सा प्रिपरेशन में कमी. थोड़ा सा, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. इसीलिए सैंपल पेपर को परचेज करिए. ठीक है, वो आपको इनसाइट देगा, ट्रस्ट मी देगा. गॉट इट. चलिए, कमिंग टू एक्ट 5 सीन 4. अब जल्दी जल्दी भगाना है. Where do the English and the Scottish forces unite to begin their march towards Dunsinane? इसमें भी आप फंसेगा. एक्ट 5 सीन 4 का सेटिंग क्या है? कहां होता है एक्ट 5 सीन 4? Where does it take place? Very good, very good. Act 5 scene 4, all the thanes meet at the woods of Burnham. ठीक है, in the woods of Burnham वो लोग वहां मिलते हैं and they unite together and from there they start their march towards Dunsinane Hill. ठीक है, बर्नम वुड के पास. What command does Malcolm give to every soldier in the woods? क्या करना है? कुछ याद आ रहा है? कीवर्ड याद आ रहा है? मिलिट्री स्ट्रैटेजी.
Lovely, lovely, amazing, amazing. To hew down a bow. Bow means branch. ठीक है? And hew means hack. कि एक ब्रांच को हैक करो, बर्नम का काटो एंड प्लेस इट बिफोर यू ऑल सो दैट वी कैन कंसील आवर नंबर्स. इट्स अ मिलिटरी स्ट्रैटेजी. चलिए नेक्स्ट वन. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक पर्पस बिहाइंड मैल्कम्स ऑर्डर टू कैरी ट्री ब्रांचेस? रीजन क्या है ये करने का? कारण क्या है कि एक एक ब्रांच को हर एक सोल्जर को अपने हाथ में पकड़ना है? वेरी गुड, वेरी गुड. कंसील. कंसील का मतलब हो गया हाइड. ठीक है? हाइड द साइज ऑफ द आर्मी, एक्चुअल साइज ऑफ आर्मी फ्रॉम मैकबेथ. स्काउट्स मींस जनरल. ठीक है? मैकबेथ के जनरल से छुपाना है. चलिए. मैकडफ सजेस्ट दैट दे शुड स्टॉप टॉकिंग and focus on the industrious soldiership. Industrious is hard work, or you can say perseverance, and soldiership is determination of a soldier. ठीक है? determination या जिसको आप resolve भी बोल सकते हो. Let's just put in our best and instead of speaking इतना ज्यादा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले काम करते उसके बाद बात करते हैं उस वे में. So what does this show? That Macduff, he believes in actions and not just rhetoric. To him, words are just empty. बोलते हैं ना, खाली बड़बोले लोग बर्तन की तरह बचते हैं. They cannot put their work into action. जो लोग सिर्फ बड़बड़ बड़बड़ करते हैं और काम नहीं करते, उनका कुछ नहीं होता है. इसीलिए यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट पर्सन जो सिर्फ बड़बोला होता है. अब आपको आपके फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे, भाई मैंने तो ये पढ़ लिया, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं. पढ़ाई नहीं होता है वैसा. एक्चुअल पढ़ाई प्रॉपरली किया जाता है. ठीक है? सो डू नॉट गो एंड बोस्ट कि मेरा हो गया है, मेरा हो गया है. अच्छे से पढ़ो. अगर एक बार हो गया है 2 बार पढ़ो, 2 बार हो गया 4 बार पढ़ो, 4 बार हो गया 10 बार पढ़ो. ठीक है? चलो लास्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस थीम्स, what is significant, important about Birnam wood moving? Birnam wood is able to move. Again, statement based है, ध्यान से. Lovely, Roshan, amazing. Ishika, good job. Rosita, Anthony, good job. नहीं, Rosita, wrong हो गया. ठीक से देखो. Abdur, good job. Yajna Datta, you too. चलो, nice. It represents P and Q. थीम्स का अगर बात किया जाए, बर्नम वुड मूविंग का थीम क्या है? बेसिकली इन्वर्जन, उल्टा हो जाना. डिफायंस. ठीक है? थीम ऑफ डिफायंस या इन्वर्जन, राइट? तो P shows that witches' prophecy were literally true, but deceptively. Defiance praised appearance versus reality हो गया. Appearance versus reality हो गया. जो defy कर दिया. Things are not always as they seem. And it represents nature rising up to purge, means to cure. The unnatural presence, yes, it does. The tree moving shows that nature itself is coming to drown the weeds, to depose Macbeth from his illegitimate position. ठीक है? So दोनों P and Q evidently visible है. Yes, yes. Iraj, yes. Fleance's escape is associated with fate versus free will. चलो मार्क्स कितने आए हैं? लवली. कितना आया? कितना जन को 5 on 5 आया इस सीन से? लवली, लवली. चलो फटाफट से भागे सीन 5 के तरफ.
What strategy does Macbeth intend to use against the approaching English army at the start of the scene? क्या वो यूज करना चाह रहा है? क्या बोलता है वो सेटन को स्टार्टिंग में? सेटन आता है, इन्फॉर्म करता है, सर आ गए हैं वो लोग, तो बोलता है ठीक है आ गए, पड़े रहने दो उनको, भूख प्यास से खुद ब खुद मर जाएंगे. Yes, amazing, very good, very good. He intends to let them lie in siege until they perish, they die from hunger and ague. Ague is fever. ठीक है. What is Macbeth's immediate reaction? तुरंत वो क्या react करता है upon hearing cry of a woman with the castle? There is a loud shriek cry which is heard in the castle. वो क्या बोलता है? अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अब तो मुझे डर भी लगना बंद हो गया है. That is what his reaction is. मतलब I have feasted. Feasted means I have dined on fear so much so that even fear has become, one second, sorry, that even fear has become incapable of fearing me any further. ठीक है. So he realizes that he has almost forgotten the taste of fear. Supped and dined with fear. Chalo, next one. How does Macbeth respond to the news of Lady Macbeth's death? कैसा response था Macbeth का? It was cold, it was detached, right? She should have died hereafter. यही बोलता है ना वो? Lovely, amazing. He says that she should have died hereafter. Any which ways she should have died. So maybe later, अभी क्यों मरी? बाद में मर जाती, मरना तो था ही उसे. This shows that he has grown completely detached. चलो, disclaimer, ध्यान से करिए. In his famous Tomorrow soliloquy, what does Macbeth compare life to? Textual, याद करिए. क्या बोलता है लाइफ क्या है? How is life? He compares life to that of an actor who struts and frets, right? A poor player. Player is an actor that struts and frets, means is always dwelling in anxiety before the stage performance. And once the performance is done, he realizes that it's done. So it was all a waste of time. And at the same time, he considers life to be that of a tale which is told by an idiot. ठीक है. So it is, and at the same time he also says that life is just like a walking shadow. So it is P, Q and S. नहीं, golden crown that weighs too heavy नहीं बोलता है. ठीक है. ये आप लोग B किसका दे रहे हैं? चलो. When the messenger reports that Burnham Wood appears to be moving, what is Macbeth's first reaction? ओ अच्छा, नेक्स्ट वन का रिपोर्ट दे रहे थे. Very good, very good, very good. He begins to, nahi. When messenger reports Burnham Wood appears, Macbeth's first reaction is he calls messenger a liar and slave. ठीक है? You liar and slave. That was his initial reaction. What does Macbeth realize about the witch's prophecy when he hears the wood is moving? Finally, when he hears that
Burnham wood can indeed move. What was his reaction to the witch's prophecy? कि क्या those equivocating find, what did they say? I'm drowned, right? That witches, that he has misunderstood their equivocation. Now what is the meaning of equivocation? Double faced, दो मुंही बातें, ठीक है, that is equivocation. Next one. How does tomorrow's soliloquy contribute to the conceptual framework of the play's ending? एंड के तरफ जाते जाते ये कैसे रोल प्ले करता है? That unchecked ambition leads to futile outcomes, ठीक है? It leads to empty outcomes. It will be option B. It underscores the theme of the futility of time and ambition. Got it? चलो लगाओ दिल. हो गया कंप्लीट? नहीं नहीं, अरे एक और बाकी है. 1 second. What is the significance of Macbeth's final command? Ring the alarm bell, blow the wind, and come rack. Rack means चलो havoc, तबाही मचा दो. सिग्निफिकेंस क्या है? हिडन क्या है इसमें? Very good, very good. That he is embracing the chaos and destruction, not realizing that the chaos which he is announcing, he is doing it for himself. ये significance है. वो अपने लिए ही तबाही बुला रहा है, ठीक है? Choosing to face his fate head on, to challenge his fate till the utterance. Remember, come fate into the list and champion me till the utterance, till I drop. चलिए अप्रिसिएशन टाइम, जल्दी से लगाइए दिल अगर आपको आ रहा है पसंद, एंड देन मार्क्स बताइए कितने आए आपको आउट ऑफ 8. हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 8? लवली, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस. चले आगे बढ़े, लेट्स गो अहेड. जल्दी से रैप अप करें. Act 5, Scene 6. What order does Malcolm give to the soldiers as they draw near enough to the castle? We are quite enough to the castle. You do not have to hold. क्या क्या पकड़ने का और जरूरत नहीं है, बस गिरा दो इसको. क्या गिरा दो? Very good, very good. Just throw down your leafy boughs, that is branches. ठीक है? Just throw your branches. What is the significance of soldiers dropping the branches in this scene? क्या इंपॉर्टेंस है इसका? क्या इंपॉर्टेंस है इसका? लवली, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. It completes the fulfillment of the witch's prophecy and their disguise being shed. Shed means being removed. Finally उनका disguise हट रहा है, ठीक है? That indeed the Burnham wood can walk to the Dunsinane hill, ठीक है? Yes, Burnham came to Dunsinane. What do the clamorous harbingers of blood and death refers to? Clamorous means thunderclapping, very loud, deafening, that is clamorous, ठीक है? Lovely.
It is the trumpet sounding for the attack. ठीक है, trumpet sounding for the attack. In the context, what does Malcolm's leadership in this scene demonstrate? He is a better and a superior, fit ruler. यही है ना? Malcolm ने जैसा military strategy दिया, this shows that he is far better than superior, fit, which shows that he is the one who is going to bring the restored order into Scotland. ठीक है? Why he will bring restored order? Because he is a fit ruler. He is fit to rule the throne of Scotland. Got the logic? Which of the following reflects the mood of the English and the Scottish forces in this scene? Which of the following reflect? ध्यान से हाँ, the mood of English and Scottish forces in the scene. What is their mood? एक तो है we have come for a holy purpose. Fear of Macbeth, supernatural, no. Readiness to fulfill their due of birth, yes. To die for their country. Confusion regarding the plan of attack, no. So that makes P and R your correct option. Option A. ठीक है? What is the significance of the phrase show like those you are? जैसे हो वैसे दिखाओ अपने आप को. Significance क्यों जरूरी है? Very good, very good. The purpose is to contradict or contrast the false face which men must hide, which the false heart dot know. ठीक है? To contradict false faces must hide what the false heart doth know. Basically, in order to avoid suspicion, we need to use wizard to mask our face, right? To use wizard, ऐसा कुछ लाइन था. सो मैकबेथ जहां पे डिसेप्शन को एम्ब्रेस किया है, मैल्कम उसी डिसेप्शन को अब एक बार एम्ब्रेस करके उसके बाद वो गिव अप कर देता है. ठीक है? ए. चलिए, कितना आया? हाउ मच आउट ऑफ 6? हाउ मच डिड यू स्कोर? लवली, लवली, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग. चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीन. बस बस अब खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस, 2 और सीन एंड डन. व्हाट डज मैकबेथ, व्हाई डज मैकबेथ रिमेन कॉन्फिडेंट even as his castle is being stormed? Invaded, लोग आ रहे हैं फाइनली. The English army is approaching. वो किसके ऊपर रिलाई कर रहा है? In spite of being tricked by the witch's prophecy, he continues to rely upon which prophecy? No man born of a woman shall be able to harm him, right? Yes, bro, even I am tired, but still I'm ongoing, na? He still believes in the equivocation of the prophecy. What is Macduff's primary motivation as he searches for Macbeth on the battlefield? क्या करना चाहता है Macduff? He is governed by a thirst for avenging or revenging his family, right? To avenge the spirits of his wife and children. चलो एकदम जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. What does Macduff mean when he says, if thou beest slain, and with no stroke means with no strike,
of mine, my wife and children's ghost will haunt me still. His revenge is, Macduff's revenge is personal. Besides restoring the country, his revenge is personal. Why personal? Because he had pronounced his entire family's death sentence for no reason. Killing of innocents. ठीक है? He feels a moral obligation to execute justice on Macbeth. ध्यान से पढ़िएगा. Which of the following reflects the tragic cycle regarding Macbeth's valor in this scene? Think. Although his hopes are shattered, but still he says that I will continue to fight. Contrasting, not contrasting, but a similarity of Macbeth's bravery in Act 1, Scene 2, right? Where the wounded captain had informed about his bravery, him being valiant. Yes, it is option D. So P is he's once again turned into a brave Macbeth, which we saw in Act 1, but now fighting for an evil cause. And then he is seeking a glorious death. No, he's not. He has become a coward who refuses to face anyone but children. No, ऐसा कुछ नहीं है. His courage is hollow. Yes, it is. Although his courage is empty because it is based on a false sense of supernatural security. So that makes P and S your correct option. ठीक है? Thou was not born of a woman, but swords eyes smile at and weapons laugh to scorn. What does this reveal about Macbeth's psychological state? What is his mind frame? Yes, he is trying to. क्या आप लोग बोल रहा है? हाँ, it is option B. Why D? D क्यों आ रहा है? He is admitting that he is afraid of Macduff. No, he is suffering from a delusion of literal invulnerability. That I am not going to be vulnerable in front of anyone because I have been prophesized. ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिए. Don't be so quick to answer. चलिए. Done with scene 7 and last combined. बस और 5 minute and आज का class will be over. Why does Macbeth initially hesitate to fight? Why is he hesitating to fight Macduff when they first meet on the battlefield? सोचो. सबसे पहला रीजन प्राइड नहीं है. सबसे पहले वो बोलता है तुम्हारे फैमिली का बहुत ज्यादा खून मेरे हाथ में ऑलरेडी लगा है. मैं अब तुमसे और आगे बात नहीं करना चाहता या तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं. That was his initial reaction. ठीक है? Yes, his soul is already too charged with the blood of Macbeth's family. That is why he is initially hesitating to fight. What revelation means revealing, confrontation does Macduff make that destroys Macbeth's confidence in the witch's prophecy? He feels completely cheated and betrayed. Very good. He was from his mother's womb untimely ripped, prematurely born. How does Macbeth describe the witches after realizing the double sense of their prophecy? क्या बोलता है witches को लेके वो? They are regarded as juggling, right? Juggling का मतलब क्या होता है? दो मुंही बातें करती है. Who palter means who only betray in double meanings, in double sense. He addresses witches as juggling find. Find का मतलब होता है दुश्मन, enemy. ठीक है?
When Macduff tells Macbeth to yield, yield मतलब surrender, झुक जाओ हमारे सामने, हार मान जाओ then, अगर नहीं लड़ना है तो. What does he suggest will happen to Macbeth if he survives? हार मान जाओ, सरेंडर हो जाओ. तो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, अगर मैं मान गया तो क्या करोगे? तो बोलता है दैट, मैकडफ क्या बोलता है, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा. He'll be put inside a cage and displayed as a rare monster so that people will come and make fun of him. ठीक है, he'll just be a subject of amusement, हंसी का पात्र. What does Ross inform old Seaward regarding the death of young Seaward? Ross क्या बोलता है, that your son is dead, your son is dead, and rather what is the exact textual line that he uses? He paid a, he died and paid a soldier's debt. ठीक है, like a soldier should be martyred, he paid that debt of a soldier. What is old Seaward's reaction to the news of his son's death? क्या बोलता है? Very good. He says that he's proud of his son because he bore the attack or the stab at his front. ठीक है, सामने में वो endure किया उसको. So he has undergone an honorable death. How does Macduff greet Malcolm? Macduff कैसे greet करता है Malcolm को at the end of the scene? क्या लेके जाता है उसका? Very good. क्या लेके जाता है? Cursed head, beheaded Macbeth. He presents the decapitated head of Macbeth to Malcolm. I'm exhausted. चलो जल्दी से खत्म करें. नंबर 8 ध्यान से करिए, बस थोड़ा सा पेशेंस फॉर अनदर मिनट एंड देन इट इज डन. I like that, Aryan. Mundi on danda. Nice. कौन सा नेचुरल ऑर्डर बता रहा है? मैल्कम ने क्या क्या किया जिसकी वजह से समझ आ रहा है कि नेचुरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड और इज अबाउट टू बी रिस्टोर्ड इन स्कॉटलैंड. कॉल बैक आर एक्साइल्ड फ्रेंड्स. एक्साइल्ड मींस बैनिश्ड. जिसको वो देश से निकाल दिया गया था उनको वापस बुलाओ, नया टाइटल दो. ठीक है, एंड डूइंग व्हाट इज प्लांटेड न्यूली विद द टाइम बाय ग्रेस वी आर गोइंग टू very soon get ourselves into ceremonies and festivities as the time comes. So it is option C, P, Q and S. Planning a second war? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है for England. ठीक है. And the last MCQ of this live. In the context of the whole play, how does the description of Macbeth as a dead butcher and Lady Macbeth as find like queen, find means enemy, evil like queen, serve as a final closure? क्यों मैकबेथ को डेड बुचर बोला गया है एंड लेडी मैकबेथ को इविल लाइक क्वीन बोला गया है? क्यों? ताकि उनके वैल्यू को क्या किया जा सके? उनके वैल्यू को अंडरमाइन करना है. नहीं, पब्लिक हैज फॉरगॉटन नहीं है बेटा. देखो यार, पब्लिक अभी तक भूला नहीं है. उनको क्यों बोला? नो 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 नो. लास्ट एमसीक्यू जाते जाते रॉन्ग करते हुए जा रहा सब. नो नो नो, डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट. नो. क्यों मैकबेथ को डेड बुचर एंड फाइंड लाइक क्वीन बोला गया है? टू अंडरमाइन और टू बी लिटिल
to belittle what they had done. So the purpose is to reduce their tragic struggle. To reduce का मतलब ही हुआ अंडरमाइनिंग एंड belittling. ठीक है, बी होगा for the sake of political stability. So whatever they did, it was all useless. And with this, Macbeth is over, done. And I'm sure that you are prepared now with each and every kind of MCQ which will be asked in your board examination. That is my assurance, that is my manifestation. ठीक है, कैसा लगा आपको, कितने मार्क्स आए आपको इस लास्ट में? हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 9? लवली लवली, लॉट्स ऑफ गॉड ब्लेस. गिव रीजन वाला वीडियो प्री रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, डोंट वरी. मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले उठा के जो जो जरूरी है, जिसके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना है, उसको मैं बना के डाल दूंगा. ठीक है, सो आपको मजा आया? अगर मजा आया तो अपने दोस्तों को, आपको मेरा फीस पे करना पड़ेगा. और मेरा फीस क्या है? मेरा फीस है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि शायद आपको भी फील हो रहा होगा ना, काफी अंडरमाइन, मतलब काफी ज्यादा अंडररेटेड चैनल है. तो प्लीज इसको सपोर्ट करके ग्रो करवाने में हेल्प करिए. ठीक है, आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट. आई विल सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे अब हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद कॉम्प्रीहेंशन. अनसीन पैसेज का बहुत रिक्वेस्ट आया था, तैयार हो जाइएगा. कल 2 कॉम्प्रीहेंशन आपको मैं साथ बैठ के सॉल्व कराऊंगा. हाउ यू हैव टू डू इट. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, signing off for today. Take care, keep smiling, keep studying. Bye-bye.